more than 10 years experience of teaching physics in renowned institutions of Pakistan like Punjab colleges. मैंने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प हमेशा इस तरह से की है कि उन्हें फिजिक्स का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट और आसान लगता था. Ulearn is the best online education platform that provides you the best on-ease education. We are using latest glass board technology to educate you. We have the best learning management system that provides you best facilities that you require. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फैसल मुनीब और आप हमारे पास यूलर्न के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं प्री-FSC की क्लासेस। इसका मतलब है अभी अभी आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या फ़ैसला करना है, किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है। तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि यूलर्न अब फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड कॉलेज भी बन गया है। इसका क्या मतलब है कि फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड कॉलेज बन गया है? इसका मतलब ये है कि अब आप अपना एडमिशन रेगुलर बेसिस पे यूलर्न की तरफ से भेज सकते हैं और आप अपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आप घर बैठे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करेंगे, आप कोई ना कोई साथ स्किल्स भी देखेंगे, आप अपनी ईज़ में रहते हुए अपनी चीज़ों को क्लियर करेंगे और हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में समझ रहे होंगे। और आपको जो डिग्री मिलेगी वो कोई प्राइवेट डिग्री नहीं होगी, बल्कि रेगुलर जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स को मिलती है उसी तरह आपको डिग्री मिलेगी। और फेडरल बोर्ड की डिग्री होगी तो वो भी आपको एज मिलेगा कि आपने FSC फेडरल बोर्ड की तरफ से की है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट लेक्चर, स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर, जिसमें हमारा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और आप चीज़ें समझते हैं, क्लियर करते हैं। अगर आप अपने आप को हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे LMS पर रजिस्टर करवाते हैं तो आपको और बहुत कुछ मिलता है, जिसमें MCQs हर टॉपिक से रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चंस, नोट्स, टीचर सपोर्ट, लाइव 1-on-1 सेशंस, हर चीज़ आपको वहाँ पर हम अवेलेबल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। इतनी लर्निंग मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि आप फिज़िकल क्लास में नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की कि आज के लेक्चर में हमने क्या करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने ये जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मेजरमेंट्स का, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हमने कंसीडर की हर टॉपिक के लिहाज से। वो 3 चीज़ें क्या थी? वो 3 चीज़ें थी नॉलेज, हमने हर टॉपिक का नॉलेज कंसीडर किया, हमने हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाई, हमने हर टॉपिक की एप्लीकेशन देखी कि किस तरह से हमारे पास SLO बेस्ड लर्निंग होगी और फिर किस तरह से हमारी असेसमेंट होगी। हमने हर टॉपिक के साथ उससे बनने वाले क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस तरह से हम लेकर चल रहे होते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं और किस तरह से हमारी असेसमेंट की जाएगी। आज के लेक्चर में चूँकि हमारे पास डिस्कस होने हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर के, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने फोकस्ड रहना है, जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका खुद से जवाब देने की कोशिश करनी है, कमेंट में लिख देना है, या फिर आपने माइक ऑन करके आप इजीली मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर इसका ये जवाब था, इसका वो जवाब था। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक्स को अपने पास रखें, नोटबुक्स बहुत ज़रूरी हैं। लेक्चर का नोट करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी आप लेक्चर देख रहे होते हैं, जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशनल लेक्चर जब भी आप ले रहे होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, For an answer to be complete, the units need to be specified. Why? देखें, ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
अगर SI सिस्टम वाले टॉपिक को मैं रेफ़र करूं तो उसके अंदर हमने नॉलेज देखा कि SI सिस्टम क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स किस तरह के होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, क्या टाइप्स हैं उनकी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये यूनिट्स क्यों बनाए गए, इन यूनिट्स से हमें फ़ायदा क्या होगा, यूनिट्स के चेंज होने से क्या चीज़ चेंज हो जाती है, किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है भाई, ये चीज़ हमने देखनी होती है। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होगी तो हम फिर बता भी सकेंगे कि जब भी कोई आंसर हमने करना है तो यूनिट स्पेसिफाई क्यों करना है। आपको पता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हमारे पास हैं मेजरमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आपने उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है। फिजिकल है ही वो क्वांटिटी जो कि आप मेजरमेंट कर सकें। इसके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, और वो की पॉइंट है हमारा कि आपने वो फिजिकल क्वांटिटी किसी और शख्स को डिस्क्राइब भी करनी है, किसी और शख्स को बतानी भी है। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहे हैं, यहाँ पर ये जी मैं आ गया थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता हुआ, और ये मेरा एक दोस्त है, ये भी खुश है कि मेरे साथ बातें कर रहा है, तो मेरे साथ बातें करते हुए सारे खुश ही रहते हैं। अब ये दोनों आपस में गपशप लगा रहे हैं। इनसे थोड़ी दूर एक हमारे पास ट्री है जिसके ऊपर आजकल आम का सीज़न है, तो हम कहते हैं जी इसके ऊपर आम लगे हुए हैं। अब ये शख्स जो मेरा दोस्त है ये मुझसे पूछता है कि भाई ये जो ट्री है ये हमसे कितनी दूर है, डिस्टेंस मैंने बताना है। अब डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका आंसर करने के लिए हमसे ये पूछा गया, इसने हमसे ये सवाल किया कि जी ये जो दरख्त है ये हमसे कितनी दूर है, हाउ फार। ये जवाब देने के लिए मुझे कुछ साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि भाई अगर इस चीज़ का जवाब मैंने देना है तो मुझे एक चीज़ मेजर करनी पड़ेगी, वो है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मैंने जब इसको बताना है तो मैं इसको कहूँगा जी ये चीज़ हमसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको आंसर दिया कि ये हमसे 10 दूर है। क्या मतलब होगा इसका? आप भी सोच में पड़ गए, मैं बता के सोच में पड़ गया, ये मैंने क्या बता दिया इसको। 10 से क्या मुराद है? 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 ईयर्स, 10 किलोग्राम, क्या? अब इस शख्स को समझाने के लिए, यानी कि इस शख्स को ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं एक वैल्यू बताऊं और वैल्यू के साथ साथ मैं एडिशन करूं एक यूनिट की, और ये यूनिट कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो उसके पूछे गए क्वेश्चन का हाउ फार वी आर फ्रॉम द ट्री एक ही जरिया है, एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन मेथड टू डू दैट। आई शुड हैव to give all the information to him so that he won't ask the another question. So इसमें मुझे वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी बताना है, और जब ये दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ तो इसको हम फिज़िक्स में कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो आपने देखा कि अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं करता, मैं यूनिट बताकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने यूनिट बताया है ये यूनिट बताकर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और तभी उस पर्सन की समझ में मेरी बात आई है। अब बैक टू द क्वेश्चन, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट, आपसे कुछ पूछा गया
और उस कुछ पूछने में यू रिक्वायर सम फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब। द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। वाई यूनिट्स क्यों स्पेसिफाई होने चाहिए? बिकॉज unless we don't specify the unit, our answer would not be complete. It will leave the questioner, वो जिसने क्वेश्चन किया है उसको वो ambiguous स्टेट में छोड़ देंगे हम। ये नहीं हमने करना। दैट्स वाई हमारा आंसर यूनिट के साथ होना चाहिए, और जब भी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस होगी हमारा आंसर हमेशा यूनिट के साथ ही होना चाहिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कोई बात इसमें पूछने वाली नहीं होनी चाहिए। तमाम के तमाम कंसेप्ट बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको एक सिचुएशन में डालकर देखा है और हमें अंदाज़ा हो गया कि हम किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, मे भी हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े बट डायरेक्शन इज नॉट द केस फॉर नाउ। हम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करेंगे। To deliver complete information, we must require unit as well as value. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the advantages of using international system of unit to communicate better? हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल, एक सिस्टम पर पूरी दुनिया का आ जाना, इसका फ़ायदा क्या है? ताकि तमाम की तमाम दुनिया नॉलेज शेयरिंग में बेटर कम्युनिकेट कर सके। आपको पता है एक बार नासा का तकरीबन $4 बिलियन का नुकसान हुआ जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक पर, और वो मिस्टेक कोई मेजरमेंट में नहीं थी, वो मिस्टेक कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नहीं थी, वो मशीन के काम करने में नहीं थी। वो एक रॉकेट लॉन्च किया गया और वो अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही अपने लॉन्च के वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि जो प्रोजेक्ट था रॉकेट को लॉन्च करने का और मार्स में उन्होंने भेजना था, उस पर 2 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी। एक टीम जापानीज़ थी और एक अमेरिकन थी, और ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैंडल कर रहे थे। जापानीज़ क्या कर रहे थे कि वो अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, जो उनकी कंट्री के अंदर राइज है, जो उसको वो जो यूज़ करते हैं, वो उसमें कैलकुलेशन कर रहे थे, और जो अमेरिकन हैं वो दूसरे सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे थे। जब दोनों की कैलकुलेशंस आपस में, वो समझे कि ऐसा यूनिट में कैलकुलेट हो रही है, MKS में कैलकुलेट हो रही है, वो समझ रहे थे कि हमारे लोकल यूनिट्स में कैलकुलेशन हो रही है। जब बाद में फाइनल लॉन्च हुआ तो कैलकुलेशन मिसमैच हो गई और सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह एक प्लेन भी क्रैश हुआ सिर्फ इस वजह से कि पायलट को जो इन्फॉर्मेशन दी गई फ्यूल की एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, वो समझा कि ये फ्यूल सफिशेंट है लैंड करने के लिए, लेकिन वो फ्यूल जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में गिवन था। इसको पायलट ने गौर नहीं किया और उसने उसको कंसीडर किया अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक, लेकिन जब जहाज़ ने लैंड किया वो ज़्यादा वेट रखता था और वो रनवे से पहले ही लैंड हो गया और उसकी वजह से जहाज़ क्रैश हो गया। तो ये एक छोटी सी गलती होती है जो आपके बिलियन मिलियन डॉलर्स का नुकसान करवा देती है। इन गलतियों से बचने के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया यूज़ करे। वो सिस्टम हमने चूज़ किया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज टू यूज़ सिस्टम इंटरनेशनल है टू बेटर शेयरिंग ऑफ नॉलेज की बेटर शेयरिंग। नंबर 2, टू कम्युनिकेट बेटर। हम ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम एम्बिग्विटीज़ निकाल देते हैं जब हम सारे एक ही पॉइंट पर यकता हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो कितनी आसान सी चीज़ है, कंसेप्चुअल कितना मज़ेदार होता है क्वेश्चन को आंसर करना। आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये 2 बातें करनी है, बस इसको थोड़ा सा
आपने शक्ल देनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट ये 2 पॉइंट नहीं लिख देने, आपने लिखना है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स आर टू बेटर शेयरिंग ऑफ नॉलेज, to communicate better between different regions of world, between different scientific communities, different regions, different scientists, ये सब कम्युनिकेट करते हैं बेटर जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम स्टडी करते हैं। बुक्स लिखना आसान हो जाती हैं, बच्चों को समझाना आसान हो जाती हैं, नए साइंटिस्ट नॉलेज जल्दी गेन कर रहे होते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में कितने रेडियन होते हैं? हमसे जो पूछा गया है इसका जवाब बताना है, हमने सिर्फ निकाल के छोड़ नहीं देना। मतलब क्या हुआ इस बात का, मुझे पता है कि मेरे पास एक पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर जो रेडियन का फार्मूला होता है वो होता है S/R। फॉर कंप्लीट सर्कमफेरेंस S की वैल्यू है 2πr, वैल्यू पुट की, हमारे पास थीटा आ गया 2πr डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल, एंड थीटा इज 2π रेडियन। अब ये जो आंसर मैंने निकाला है ये मैंने असल में कैलकुलेट किया है। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि ये कैलकुलेशन है। क्या उसने क्वेश्चन में मुझे यही कहा है कि कैलकुलेशन करो? देखें ज़रा, हाउ मैनी कितने हैं भाई, रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कितने हैं? वो पूछ रहा है कितने हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं तो आप मुझे इतना सा आंसर करेंगे कि सर 7 होते हैं। आप मुझे ये नहीं कहेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पर ला के छोड़ नहीं देंगे, कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। तो ये वो नंबर है जो मुझे जानना है, 2π, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताना भी चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देयर आर 2π रेडियन in circumference of a circle। ठीक है ना? ये चीज देखें, जो आपसे पूछा जाएगा वो आप आंसर करेंगे। SLO बेस्ड असेसमेंट का मतलब यही है, जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए आपने उसका आंसर उस तरह से करना है जिस तरह से पूछा गया। इस तरह से नहीं करना कि जो आपको आता है आप बता दें, नहीं, उसको कंक्लूड करना है उस टेंस में, उस सेंटेंस में जो कि आपसे पूछा गया है, ताकि आप अपने मार्क्स को यकीनी बना सकें, क्लैरिटी के साथ आप अपने मार्क्स के ऊपर फोकस्ड हों कि मुझसे जो पूछा मैंने वो बताया। इस क्वेश्चन में एक और बात भी पूछी गई है, हाउ मेनी स्टीरेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर। तो स्टीरेडियन अगर मैंने फाइंड करने हैं उसके लिए मैं क्या फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास थीटा इन स्टीरेडियन यानी कि एक 3D एंगल है, ये मेरे पास बराबर होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्फीयर मेरे पास होता है 4πr² डिवाइडेड बाय r², ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा 4π, दैट मीन्स ये मेरा आंसर है और इसका यूनिट क्या होगा, स्टीरेडियन। अब इस आंसर को देखें, अब मैंने अगेन ये कैलकुलेट किया, अगेन मैं इसी तरह का एक सेंटेंस लिखूंगा और अपने आंसर को स्पेसिफाई करूंगा कि भाई जो तुमने मुझसे पूछा है उसका जवाब जो है वो ये है, जो पूछा जाए उसका आंसर करना है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले तो पूछा है एक नॉलेज का क्वेश्चन, भाई लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। सो लीस्ट काउंट एरर होता है हमारे पास मिनिमम जो लेंथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं,
या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए जो वो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, उसे हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। अब उस लीस्ट काउंट में एक डाउट शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्केल से एक लेंथ ली, मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड सो ऑन। अब इस स्केल के अंदर फॉर एग्जांपल जो लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं वो यहाँ सेंटर में आकर एंड हो गई। तो पर्सन क्या करेगा, वो इसको 3.3 के साथ जोड़ देगा, और वो ये भी कर सकता है कि इसको 3.2 के साथ जोड़ दे। इन दोनों केसेस में यहाँ से ये 3 वाला फिगर और यहाँ से ये 2 वाला फिगर, ये मेरे लिए क्या है, ये डाउटफुल है। इसका मतलब ये जो डाउटफुल डिजिट है ये मेरी मेजरमेंट में एक एरर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी कि हमारे पास लीस्ट काउंट एरर जो है ये नॉर्मली अनसर्टेनिटी होता है। इसको आपने याद रखना है। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। अब हमने ये बात अच्छी तरह से समझी हुई है कि ये जो डाउट है ये डाउट लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो अगर मैंने इसको कम करना है तो लीस्ट काउंट कम करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट कम करने का मतलब ये हुआ, अगर मैंने इस एरर को रिड्यूस करना है, मैं क्या यूज़ करूँगा, यूज़ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा जिसका लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट जिसका लेस हो। जितना ये छोटा होगा उतना ही मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही लीस्ट काउंट एरर मेरा कम होता जाएगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है और जुड़े रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अपनी डिस्कशन को लेकर, जो कि हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर। और इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ एसएलओज को, साथ ही साथ असेसमेंट को, कि किस तरह से हमने हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, किस तरह से हमने हर चीज़ को समझना होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, why including more digits in answer does not make it more accurate? हमारे पास जब भी कोई आंसर होता है उसको हम कुछ डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3.0, 3.00, it has the same magnitude for us, 3. But the decimal places represents the different meaning. Decimal places represents the different significant numbers in both given numbers. For example, in the above number, we have 2 significant figures, and in the second number, we have 3 significant figures. What does significant figures represent? Do remember that significant figures represent, let me write sig fig for the significant figures, they represent precision of a physical quantity. They represent precision of a physical quantity. What do we mean by that? We mean by that the instrument chosen for the reading is more precise where we do have the most significant figures. From the current example, I can clearly show here that this reading has been taken with a scale if the unit is centimeter for both of them, and this reading is taken from a vernier caliper if the unit is centimeter as well. How can we know that? You know that for a scale you have different markings on it, and those markings allow us to take a reading at up to 10th part of a centimeter. So it's 2 centimeter, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and so on. It makes the 10 different part of a centimeter, 10th part of a centimeter. That means whenever I will write a reading from the scale, I will, let's say I have a line that ends here, I will write it 2.4. That gives me the 10th part of a centimeter, which is 0.4. Now, when I would take a reading from vernier caliper, we all know vernier caliper gives its least count is 0.01 centimeter. It gives up to 100th part of a centimeter. When we get a reading up to 100 part of a centimeter through an instrument, we must represent that reading by using decimal places. We can represent the reading, the same reading above, but now I use the 2 decimal places which represent the instrument. That means the instrument chosen here allow us to take a reading from any instrument which is up to which gives us 100 parts of any centimeter. So that's how I do know what is this reading means, what is this reading means. So these readings represents the precision, and precision is least count of the instrument. Okay, it says why including more digits in answer does not make it more accurate. We do know that the precision depends on absolute uncertainty. More least the absolute uncertainty is, more precise instrument is. And accuracy is directly depends on the percentage uncertainty, relative uncertainty. That means the least the relative uncertainty, the more accurate will be the instrument. In the same sense,
least the absolute uncertainty, the more the precise instrument will be. So including more zeros or more decimal places in a reading does not affect our accuracy, because accuracy does not depend on precision. It does not depend on absolute uncertainty. It does depend on percentage uncertainty. That's why if you increase the numbers of the decimal places in any given number, it will not affect the accuracy of the measurement. It just affect what? The precision only. I think the answer for this question is clear to you. Now moving on to the next question, which is what determines the precision of a measurement? How can we determine the precision of a measurement? We just discussed that part as well. The precision of a measurement can be determined by significant figures in it. It can be determined by least count of the instrument. So to measure the precision of any reading, you may have two different ways. The way number one is, if you know the instrument, then you can definitely say that the least count of the instrument is equivalent to the precision of our reading. And the second way to find the precision is know the significant figures, the decimal places. If you know the decimal places, you can also predict the instrument for which we have taken the measurement. So that question as well is very simple. Moving on to the next question, if two quantities have different dimensions, okay, so we have two quantities which have different dimensions. We also covered that article in a video, and you can watch that video again if you do have any lacking of concept what dimensions are. For now, I will let you know that dimensions are qualitative meaning of a physical quantity. So if the dimensions are qualitative meaning of a physical quantity, then it must ensures the quality of outcome. It says, is it possible to multiply or divide them? Yes, we can do that. For example, consider that this thing is a physical quantity which is a controller for now, and this thing is also a physical quantity which is a marker for now. You can multiply them, but it will become controller and a marker. So you can multiply them, you can divide them. We do so in every second equation. Let's say F equals MA. You are multiplying two physical quantities. A equals V by T. You are dividing two physical quantities. So yes, for the first part of the question, the answer will be yes, you can do that. But on the other hand, the second part of the question, can you add or subtract them? It's little bit. The answer is simple. No, you cannot do that. You cannot add or subtract different quality of the quantities. Why do so? That means if you have marker, you have another marker. Combined, that means addition. What you have? You have markers. You cannot add two, you cannot combine two different quantities. It will be senseless. If you have another physical quantity which is controller by now, and you have a marker, you combine them, not multiplying them. In the sense of multiplying, you can say that it's marker and controller. Now you combine them in the sense of addition. Addition means you have to merge the quantities. When you merge them, what you will call this new thing? You have to make a sense of new thing which is derived. You cannot call it a marker separately. You cannot call it a controller separately. You must have to name something, another name, another physical attributes, another big branch of. So for the sense making, as it is senseless to call these two things combined, for the sense making, the physical quantity to retain their sense, we are not allowed to add two different physical quantity. So as the dimensions ensures the quality, while adding two different dimensions, that means you want to
add length into mass, you are not allowed to do that. This is not possible. Why? Because it makes no sense. Now the question is simple and clear to you why we can add or divide two quantities, two different quantities, maybe they do have different dimensions, and why don't we add or subtract two different quantities. Now moving on to the next question, the human pulse and the swing of a pendulum are possible time units. Okay, yeah, definitely. Any repetitive thing occurring in nature can be a standard of time. We can make that standard. Whenever we have to check the time, we can calculate its repetition, or we can see the repetition. And we do that in the past, like we currently are following the movement of Earth around the Sun for our measurement of a year, the movement of Moon around the Earth for the measurement of a month, and days and nights shifts are also taken as time standard to measure the time between day and night. So we do that. We do have some other sort of units of time, standards of time that we do use in our daily life. So it says the swing that normally children do in the amusement park and the pendulum can also be the time standards. Why don't we use them? To be a standard, we must have two qualities in any measurement. The quality number one is it should be invariable. Invariable means it should be constant. It should not change its value or nature. It should not be affected by circumstances. So these are the attributes that an invariable thing must have. So what do you think about the swing? Do swing have the constant repetition? No. They got damped by time. Do they don't change their value or their nature? No, they do change. Do the effect of circumstances, effect of environment does not affect the value of their repetition or the different attributes they have? Yes, they do affect. So, to be a standard, we must have an invariable quantity. The quantity or the phenomena should be invariable. It should be constant. It should be rigid in its nature. So as the pendulum swing or a swing, the playing swing do not have this attribute, so we are not able to use them as a time standard. Currently, what is the time standard for us? The time standard for us is the vibration of an atom, the cesium atom, which is not affected by any environmental or any other circumstances that we may have in around it. So that's why we make a standard which is invariable. It should be accessible as well, and we have to make compromises between both of the two. The second attribute for any standard is, the second attribute, let me write it for you, it should be accessible. That means it should be in approach of everyone. So if you make an expensive standard like an atomic clock, everyone cannot buy that standard. If you make a simple standard which everyone can easily buy like pendulum, it will not be invariable. So you must have to make compromises between two of them. You may have the accessible attribute
or you may have the invariable. And we always go for the invariable. Accessibility is not a big issue. We can make the copies of that, or we can make a simple standards that may be not invariable, but they can do their job. On to the next question. If an equation is dimensionally correct, is that equation a right equation? So we must know this fact. If an equation is dimensionally correct, means it is dimensionally correct. For example, let me tell you an equation. T equals square root L over G. It's the equation. I want to write the name of the equation. It's the equation for the time period of a simple pendulum. Everyone know that this is not a correct equation. The correct equation is T equals 2 pi square root L over G. But when you dimensionally analyze both of these equations, it will be correct. It will be correct because dimensions does not account for the constants that may appear in a calculation or in a formula. They always catered by the experiment. We get the constant and the value of the constant by experimental results, by statistics, and by applying different techniques on the equation. So an equation may be true dimensionally, but if may include the dimensionless figures or the other figures, then it can create a problem. So equation to be true must be experimentally true. But one thing for sure, if an equation is not dimensionally correct, it must refer that it will not be experimentally correct. So that was our topic about the conceptual question, and I hope you encountered all the concepts that I have delivered to you. You know the meaning of every question, and you know how to answer the question in your assessment according to the SLOs. Basically, SLO means what you have prepared for any topic, what you have for any topic. Do you have its knowledge? Do you have its understanding? Do you have any of its application? Can you apply that in your daily life? So if you know these three things about any topic, you can answer any question. The assessment will be very easy to you. What you can do, you just have to take a keen interest in the statement. What the statements requires from you. Does it require the definition only? Does it require the understanding? Do you have to calculate something? Do you have to mention something? Just this is the important part that you must take a keen interest in while reading physics. So that's Faisal Munif for you. Inshallah, we will meet in the next lecture. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Momina Sheikh and I am teaching chemistry at Ulearn. I have been teaching for more than 5 years. I have done my graduation from University of Education. Chemistry is a dry and challenging subject, but I will make it easy and interesting for you. Ulearn is Pakistan's best online education platform, which is providing you education through latest glassboard technology. So join us and start your journey with Ulearn.